गाइटन एंडोक्राइनोलॉजी से चैप्टर नंबर 79 आज स्टार्ट कर रहे हैं. इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड विल टच सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट डायबिटीज एज वेल. Now, as you can see from the title of the chapter, insulin obviously is an extremely important thing in your body, because the lack of insulin or resistance to insulin leads to diabetes. So you know how common is diabetes mellitus, and in certain parts of the world, including by the way in certain countries of the Asian region, including India, Pakistan, diabetes is increasing exponentially. बहुत तेजी से बढ़ रही है. So it's a serious problem, major healthcare burden. और इसीलिए ये चैप्टर बहुत रेलिवेंट है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंसुलिन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं. और इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखें, अक्सर आपको ऐसा लगता है कि इंसुलिन इज रेलिवेंट ओनली टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ऐसा नहीं है. इंसुलिन हैज इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एज वेल एज लिपिड मेटाबॉलिज्म, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. एंड देन दी काउंटर हार्मोन द ग्लूकागॉन, उसका क्या क्या काम है. ठीक है, सो विल टॉक अबाउट ऑल दीज थ्री थिंग्स इन दिस वीडियो. Pancreas, in addition to the digestive function, secretes two major hormones which are known as insulin and glucagon. अब ये जो पैंक्रियाज है ना, ये बड़ा ही मैजिकल किस्म का ग्लैंड है. इसमें से दिस इज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन एज वेल. इसमें एक डक्ट है और उस डक्ट के थ्रू पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, पेप्सिनोजेन और ये सब चीज़ें जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं वो रिलीज होती हैं और डक्ट के थ्रू पहुंचती हैं ड्यूडेनम में और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं. सो इसका एक फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन, और इस पार्ट ऑफ पैंक्रियाज को जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन पैंक्रियास, बिकॉज सिंपल टर्म्स में उसकी एक डक्ट है और डक्ट के थ्रू वो सिक्रीशंस बाहर आ रही हैं. अच्छा, फिर ये होता है कि इस पूरे पैंक्रियाज में देयर आर सम आइलेट्स. ये छोटे छोटे आइलेट्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. उनमें से फिर कुछ और चीज. तो द पॉइंट इज कि ज्यादातर जो पैंक्रियाज है इट इज देयर फॉर सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लेकिन बीच बीच में देयर आर सेल्स का एक ग्रो होता है. उन ग्रो से कुछ और भी निकलता है जो डायरेक्टली ब्लड में एंटर होता है. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकागॉन, फॉर एग्जाम्पल सम अदर थिंग्स एज वेल. तो ये वाला जो पोर्शन है जो छोटे छोटे नेस्ट ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल है, इनको हम नाम देते हैं एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज. सो पैंक्रियाज इज काइंड ऑफ अ डुअल ग्लैंड. It releases digestive enzymes as well, and then it releases important hormones such as insulin and glucagon. Okay, and they're crucial. Word use किया है crucial. They are crucial, यानी important से भी ऊपर कोई चीज़ है for normal regulation of glucose, lipid as well as protein metabolism. So not only glucose but also lipid and protein. Although the pancreas secretes other hormones such as amylin, somatostatin, pancreatic polypeptide, but their functions बहुत ज़्यादा well defined, well established नहीं है. But obviously insulin और glucagon के बगैर medicine की study complete नहीं है. The main purpose of the chapter is to discuss the physiological roles of insulin and glucagon and some pathophysiology associated with diabetes mellitus. Okay? अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी एनाटमी बताई है. एनाटमी की मेरी BD84 से पूरी पैंक्रियाज की अलग वीडियो भी मौजूद है. एंड देन वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इन द बीर सिंह. सो एनाटमी भी मौजूद है, हिस्टोलॉजी भी मौजूद है. गो रीड दोज थिंग्स ताकि आपको ये जो सिर्फ एक पैराग्राफ में पूरी एनाटमी बताई है वो जरा तफसील से समझ में आ जाए. ठीक है. द पैंक्रियाज इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर टाइप ऑफ टिश्यू. वन इज कॉल्ड द एसिनाई, और एसिनाई बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसमें से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो डिओडेनम तक जाते हैं. एंड देन देयर आर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. दीज आर स्मॉल नेस्ट ऑफ सेल्स जिसमें से इंसुलिन, ग्लूकागॉन डायरेक्टली ब्लड में जाता है. सो दैट इज द एंडोक्राइन पोर्शन. सो इफ यू टेक अ सेक्शन फ्रॉम द पैंक्रियाज, सो दिस इज फॉर एग्जांपल ऐसे पैंक्रियाज था, यहाँ से उसका सेक्शन करके ये चीज फ्रंट से आपको दिखा रहे हैं. सो दीज आर द एसिनाई. इनमें से निकलेंगे जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस जो डक्ट्स में जाएंगे और अल्टीमेटली पैंक्रियाटिक डक्ट में चले जाएंगे. सो ये तो हो गया एक्सोक्राइन पोर्शन. फिर ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी ये छोटे छोटा बीच में वो कहते हैं ना सारा पानी, बीच में थोड़ा सा खुश्की. सो ये जो थोड़ा सा सेल का एरिया है जो हार्मोन्स बना रहा है, इसको हम कहते हैं आइलेट्स. ओके. द ह्यूमन पैंक्रियाज हैज 1 to 2 million ऑफ आइलेट्स ऑफ. ये छोटे छोटे से जो सेल्स के क्लम्प्स हैं इनकी भी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 1 to 2 million in each pancreas. Each islet is only about 0.3 millimeter, बहुत छोटा सा है, and contains a few cells. The islet contains three major type of cells. उसमें alpha cells हैं, beta cells हैं और delta cells हैं. They are distinguished from one another by their morphological and staining patterns. So आप देख भी रहे हैं कि सब अलग अलग कलर के दिख रहे हैं यहाँ पे. Yellowish are the delta cells, and then bluish are the alpha cells, and then the beta cells are क्या है ये? Purple color है, whatever. मैं कलर्स के मामले में थोड़ा सा बेकार आदमी हूँ. आप बताएं कलर क्या है?
ओके, सो ये अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. बीटा सेल्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा हैं. दे अबाउट 60% ऑफ ऑल द सेल्स इन द आईलेट. दे लाई मेनली इन द मिडल ऑफ ईच आईलेट एंड दे सीक्रेट इंसुलिन एंड एमाइलिन. सो बीटा सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन, दैट्स इंपॉर्टेंट. और यहाँ अगर आप इनको देखो भी कि ये जो पूरा आईलेट है इसमें बीटा सेल्स सबसे ज़्यादा आपको नजर आएंगे ना, ये पॉपुलिश वाले जो सेल्स हैं. सो दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड दे प्रोड्यूस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंसुलिन. हार्मोन्स दैट इज ऑफन सीक्रेटेड इन पैरेलल विद इंसुलिन. अमाइलिन की बात हो रही है. अल्फा सेल्स अबाउट 25% एंड दे सीक्रेट ग्लूकागॉन. And then 10% of the total are the delta cells, which produce somatostatin. Okay, तो ये तीन आपको चीजें याद रखनी है, अल्फा बीटा डेल्टा. They are part of these islands. In addition, at least one other type of cell type are also well established, and they are called PP cells. Wow, pancreatic polypeptide इनमें से रिलीज होता है, इसीलिए इनका नाम है PP, pancreatic polypeptide. The close interrelations among these cell types in the islet of Langerhans allow cell-to-cell communication and direct control of secretion of some of the hormones. ये इतने closely ये इसको बोलता है भाई अब तू ये रिलीज कर, अब तू ये रिलीज कर, type of story. Okay? अब so, दो बेसिकली मुझे इस चैप्टर में आपको हार्मोन्स की डिटेल्स बतानी है. एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन, और फिर डायबिटीज की बात करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट द स्टोरी ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन सबसे पहले आइसोलेट हुआ था फ्रॉम द पैंक्रियास इन 1922. सो इट्स एग्जैक्टली 1 century now. That because we are living today in 2023, तो तकरीबन एक पूरी सेंचुरी हो गई, थोड़ा सा ज़्यादा, एक साल ज़्यादा. और किन्होंने ये सबसे पहले आइसोलेट किया था? बेंटन एंड बेस्ट. अब ये भी मज़े की बात है कि इसका नाम इन्होंने बेंटन एंड बेस्ट हार्मोन नहीं रख दिया, इसका नाम इंसुलिन है. एंड ऑलमोस्ट ओवरनाइट जैसे ही ये आइडेंटिफाई हुआ था इंसुलिन का कंपाउंड, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज वॉज अवेलेबल, बिकॉज डायबिटीज में बहुत बड़ी परसेंटेज उन पेशेंट्स की है जिनमें इंसुलिन कम क्वांटिटीज में बनता है या इंसुलिन नहीं बनता. सो ऐसे पेशेंट्स को अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन दें, उनका डायबिटीज सेट हो जाएगा. सो ओवरनाइट दैट वाज अ हिस्टोरिक अचीवमेंट. एंड हिस्टोरिकली इंसुलिन हैज बीन एसोसिएटेड विद ब्लड शुगर. लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इस चैप्टर के कि कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द ओनली थिंग जिस पर इंसुलिन काम करती है. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. सो प्रोटीन्स पे भी इसका रोल है और फैट्स पर भी इसका रोल है, अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में. नाउ इंसुलिन, दैट्स एन इंपॉर्टेंट लाइन. इंसुलिन इज अ हार्मोन एसोसिएटेड विद एनर्जी अबंडेंस. क्या मतलब है इसका देखिए, मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी में ना दो तरह के, न्यूट्रिशन वाइज बात कर रहा हूँ, दो तरह के स्टेट्स होती हैं, दो तरह की सिचुएशन होती है. नंबर 1 इज नोन एज द वेल फेड स्टेट, यानी जब आपने ठीक ठाक खाना खाया हुआ होता है. एंड नंबर 2 इज द फास्टिंग स्टेट, यानी जब आपने खाना नहीं खाया हुआ होता. ओके, सो वेल फेड स्टेट जब रोटी छोटी ठीक ठाक खाई हुई है, दैट इज वेयर यू हैव एनर्जी अबंडेंस. यू हैव अ लॉट ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी बिकॉज आपने खाना शाना खाया हुआ है. बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी, लॉट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन योर बॉडी, इंसुलिन कम इनटू एक्शन. So this is basically the hormone of well-fed state. As we discuss insulin in the next few pages, it will become very clear that insulin secretion is associated with energy abundance. That is, when a person's diet includes a great abundance of food and provide energy, especially excess amount of carbohydrate, तो insulin secretion बढ़ जाती है, it increases. In turn, the insulin plays an important role in storing excess energy. ये जाहिर है इसका काम ये है, अभी पढ़ेंगे आगे, कि सेल के अंदर ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर लेके जाता है. सो इट काइंड ऑफ स्टोर्स द एनर्जी. इन केस ऑफ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इट कॉजेज देम टू बी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन. सो ज्यादा ग्लूकोज अंदर जाता है सेल के और ज्यादा ग्लाइकोजन बनता है. ग्लाइकोजन यू नो इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ योर एनर्जी इन द लिवर. Okay. Furthermore, all the excess carbohydrates that cannot be stored as glycogen are converted then into fats and stored into the adipose tissue. इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बंदा बहुत ज़्यादा मीठा खाएगा, ग्लूकोज दबा के आप खाएंगे, तो अल्टीमेटली आप काफ़ी मोटे छोटे से हो जाएंगे. उसका रीज़न ये है क्योंकि पहले तो इंसुलिन ये करेगा कि इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कराएगा ग्लाइकोजन में, ताकि आपके बॉडी में एक एनर्जी रिजर्व जमा हो. और दूसरा, फिर जब ग्लाइकोजन भर जाएगा लिवर में, उसकी भी एक लिमिट है ना, एक पॉइंट तक वो काम करेगा. जब काफ़ी सारा ग्लाइकोजन बन जाएगा तो अब ये ग्लूकोज, क्योंकि आप तो खाना रोक नहीं रहे, अब ये ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन ही होगा. सो इनिशियली ग्लाइकोजन स्टोर्स, उसके बाद एडिपोज टिश्यूज में फैटी स्टोर्स. अच्छा, प्रोटीन्स के केस में इंसुलिन हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट. किस चीज़ पर डायरेक्ट इफेक्ट है, अभी आप देखें, एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द सेल. So it promotes amino acid uptake by the cells and conversion of amino acid into protein. अब जाहिर है इंसुलिन ग्लूकोज को सेल में डाल रहा है, प्रोटीन को सेल में, अमाइनो एसिड को सेल में डाल रहा है और फैट्स को भी सेल में डाल रहा है. तो ये सेल में डाल के इनकी
कॉन्सेंट्रेशंस को सेल में बढ़ा रहा है, इनके अमाउंट्स को, तो ऑब्वियसली इट विल इनहिबिट प्रोटीन ब्रेकडाउन, इट विल इनहिबिट फैट ब्रेकडाउन. तो ये आपको कॉमन सेंस की बात है ये. इट विल इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स ऑलरेडी इन द सेल्स, क्योंकि इसका काम है अमाइनो एसिड को अंदर लेके जाना, ना कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं कि इंसुलिन की केमिस्ट्री क्या है. देखें, ये एक हार्मोन है और काफ़ी सारे हार्मोन्स बॉडी में मल्टीपल स्टेजेस से बनते हैं, एंड दैट्स हार्मोन इज अ प्रोटीन. सो प्रोटीन की जो सीक्वेंस होगी ना, कि देयर विल बी डीएनए सीक्वेंस फॉर दैट प्रोटीन, will be converted into RNA, will then be converted into protein, और फिर उसकी ये सब कुछ कहाँ होगा? DNA obviously RNA में convert होगा in the nucleus, then the RNA comes out in the cytoplasm, राइबोसोम पर जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और फिर गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी फर्दर मॉडिफिकेशंस करेंगे. तो ये इंसुलिन भी इन्हीं स्टेजेस से बनता है. So human insulin, which has a molecular weight of about 5,000 Dalton, are composed of two amino acid chains, A और B chains, A chain, B chain, और C chain फिर अलग हो जाती है. Initially 3 chains होती है. So there are 2 chains and they are joined together by disulfide bonds. So this chain and this chain, disulfide bond. You see, disulfide because there are 2 sulfide groups. So disulfide bond, they are connected to each other. Insulin is synthesized in the beta cells by usual cell machinery for protein synthesis, जो मैंने आपको यहाँ बताई है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन फिर मॉडिफाई होगा, और ये सब कुछ हो रहा होगा इंसुलिन के केस में इस सेल के अंदर और इस जैसे तमाम सेल्स के अंदर, बिकॉज ये है हमारा अपना बीटा सेल, और इंसुलिन बनता है बीटा सेल में. दैट वी नो वेरी क्लियरली. ओके. अच्छा, ये डिफरेंट इसके फॉर्म्स होते हैं. डायरेक्ट इंसुलिन नहीं बनता, पहले प्री प्रो इंसुलिन बनता है, जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, 11,500 अमीनो एसिड्स, नॉट अमीनो एसिड्स इज द वेट, 11,500 डाल्टन. फिर प्री प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है. आप देखें, वेट कम हो गया, एंड देन प्रो इंसुलिन इज देन कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन. So most of the proinsulin is further cleaved in the Golgi apparatus to form the insulin, which is composed of the A and B chains connected by disulfide linkages, and the C peptide. वो अलग हो जाता है, also called the connecting, इसीलिए इसका नाम C भी है, connecting peptide. The insulin and the C peptide are packaged in the secretory granule. तो जब भी इंसुलिन रिलीज होता है, साथ में C peptide भी रिलीज होता है. इसीलिए if you measure the C peptide, you actually measure the synthesis of insulin. Okay? The proinsulin and C peptide have virtually no insulin activity. However, C-peptide binds to a membrane structure, most likely a G-protein coupled membrane protein, that elicits the activation of at least 2 enzymes, sodium potassium adenosine triphosphatase and endothelial nitric oxide synthase. Although both of them have multiple physiological function, the importance of C-peptide in regulating these enzymes is uncertain. So things which are uncertain, I don't want you to go into the details of those, okay? Now, C-peptide levels can be measured by radioimmunoassay in insulin treated diabetic patients to determine how much of their own natural insulin is there. So अगर C peptide के levels high हैं, इसका मतलब उनमें naturally insulin बन रहा है. और अगर एक patient है जिसमें आपने insulin के levels को check किया, insulin के level high हैं और C peptide के levels low हैं, तो इसका simple मतलब ये है कि ये patient endogenous insulin नहीं बना रहा, इस patient ने बाहर से insulin का injection लिया हुआ है. Okay, as simple as that. When insulin is secreted into the blood, it circulates almost entirely in unbound form, not protein bound. Because it has plasma half-life that averages about 6 minutes, insulin की half-life बता रहा हूँ, it is mainly cleared from the circulation within 10 to 15 minutes, except for the portion of the insulin that combines with the receptors in the target cells. The insulin is degraded by the enzyme insulinase. So अगर एक सेल है और इस पर इंसुलिन बाइंड हो चुका है, तो फिर इसको डिग्रेड करने के लिए एंजाइम आएगा इंसुलिनेज, वरना जो ब्लड में घूम रहा है वो 10-15 मिनट में डन, गेट आउट. ओके. This rapid removal from plasma is important because at times it is important to rapidly turn off the control functions of insulin as it is to return them on. So, I mean, the point is, obviously you don't want something roaming around जो हर वक्त ग्लूकोज को अंदर ही डाल रहा हो सेल्स के ना. यार हमें तुमसे प्यार है बट इतना भी नहीं, ठीक है. तो इंसुलिन को बॉडी से निकालना भी ज़रूरी है. Now, how does insulin works on the target cell? कौन से receptors involved हैं? To initiate the effect on the target cell, insulin must first bind with and activate a membrane receptor protein that has a molecular weight of about 3 lakh Dalton. खुद इतना छोटा सा है 5,000, but इतने बड़े receptor को control कर रहा है. So if you look at the diagram here, so here
insulin binds on obviously an insulin receptor, and that's true for actually any protein which has to do its action. या तो वो receptor cell membrane पे होगा, bind करेगा उससे, या फिर cytoplasm में होगा, या some cases में nucleus में होगा, but there has to be a receptor. So अगर मैं आया हूँ मुझे कोई receive करने वाला नहीं है तो क्या फायदा यार. The insulin receptor is a combination of 4 subunits and they are held together by disulfide linkages. अब वो जो 4 इसके subunits हैं, they are named as 2 are alpha subunits entirely outside the cell membrane and 2 are beta subunits and they penetrate through the cell membrane. So यहीं पर बात रोक के जरा इसको देख लेते हैं. So this, for example, is the cell membrane, and you see these are the outer units, 2 alpha subunits, and these are the beta subunits, and these are through the cell membrane. है ना, ये cell membrane है तो they are going through the cell membrane, and all 4 are connected to each other. ये दोनों alpha आपस में जुड़े हुए हैं, disulfide bond. ये alpha is beta से जुड़ा हुआ है, disulfide bond. ये alpha is beta से, तो ये चारों component of the insulin receptor, they are all connected to each other, okay, by disulfide bonds. Insulin binds with the alpha subunits on the outside of the cell, but because of the linkages with the beta subunit, portion of the beta subunits protruding into the cell membrane are autophosphorylated as well. जैसे insulin आगे लगता है, there is phosphorylation of the receptor. Thus, the insulin receptor is an example of enzyme-linked receptor because phosphorylation हो रही है. Autophosphorylation of the beta subunit of the receptor activates a local tyrosine kinase activity, which in turn causes phosphorylation of multiple other intracellular enzymes, including a group known as insulin receptor substances, IRS. So, phosphorylation is the key. Insulin जैसे ही आके attach होगा, phosphorylation of the receptor, and then phosphorylation of the enzyme, activation of this enzyme. जैसे ये enzyme activate होगा, phosphorylation of other proteins and enzymes. So, and these proteins which are being phosphorylated now by the insulin activity, they are known as insulin receptor substrates. इनका it's a big group. इसमें काफी सारी proteins हैं, IRS1, 2 and 3. They are expressed in different tissues. The net effect is to activate some of these enzymes. ये सब enzymes हैं, and also inactivate some of the others. In this way, insulin. So ये जो phosphorylation का phenomena है ना, ये biochemistry में पढ़ाया भी मैंने आपको कि phosphorylation बाज enzymes में अगर हो तो उनको activate करती है और बाज enzymes में अगर हो तो उनको inactivate करती है. ठीक है? In this way, insulin directs the intracellular metabolic machinery to produce the desired effect. बाज एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, बाज को इनहिबिट करना. और वो डिजायर्ड इफेक्ट्स क्या हैं? द मेन इफेक्ट्स आर, नंबर 1, within seconds after insulin binds with its membrane receptor, the membranes of about 80% of the body cells markedly increase their uptake of glucose. तेजी से ग्लूकोज अंदर. अब ये एक्शन कैसे होता है? The action is especially true for muscle cells and adipose tissue, but not true for most of the neurons in the brain. क्योंकि इंसुलिन नहीं चाहिए वहां पे बेसिकली. ये बात हो रही है, देखते हैं अभी इसको यार, समझते हैं. The increased glucose transported into the cells is immediately phosphorylated and becomes a substrate for all the usual carbohydrate metabolic function, because जैसे ही glucose phosphorylate होगा पूरा pathway start हो जाएगा glucose metabolism का. The increased glucose transport is believed to result from translocation of multiple intracellular vesicles to the cell membrane. These vesicles carry multiple molecules of glucose transport proteins. Where insulin is no longer available, these vesicles separate from the cell membrane and go back into the interior. अब देखो ये बड़ी मजे की बात है. Suppose ये एक सेल है, इस सेल पे आके इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा. सेल के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज रिसेप्टर्स अंदर घूम रहे हैं. जैसे ही यहाँ पे एक्टिविटी होगी, इंसुलिन बाइंड करेगा, ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर आ जाएंगे. अब जब ये रिसेप्टर का नंबर बढ़ जाएगा तो ज्यादा ग्लूकोज बाइंड होगी और ज्यादा ग्लूकोज अंदर चली जाएगी सेल्स के. एंड दैट यूजुअली हैपेंस इन मसल्स, इन एडिपोज टिश्यू, नॉट इन द न्यूरॉन्स. Okay. The second thing that you have to remember is the cell membrane becomes more permeable to many amino acids, potassium ions, and phosphate ions. So that's another effect of insulin. More potassium into the cell, more amino acid into the cell, more phosphate into the cell. Okay. The third thing is slower effect occur during the next 10 to 15 minutes to change the activity of the level of many more intracellular metabolic enzymes, क्योंकि phosphorylation होगी, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे phosphorylation होगी रिसेप्टर की, फिर phosphorylation होगी IRS की. सो सेल के अंदर बहुत सारे enzymes की एक्टिविटी चेंज होगी, बाजों की बढ़ेगी, बाजों की कम होगी. And the last one is the much slower effect continue to occur for hours or even several days, and this effect include what? These result from changes in the rate of translation of the messenger RNA at the ribosome level, or base enzymes at the DNA level, उनकी expression change होती है. So obviously this is a long-term effect.
अब एक एक करके मुझे आपसे डिस्कस करना है कि इंसुलिन का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट है, फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर, और फिर फैट। तो जनरल बात आपकी समझ में आ गई कि हाउ डज इंसुलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बीटा सेल्स, what is the chemical composition of insulin, what is the receptor that it binds to, and then now the effects on carbohydrate metabolism. So immediately after a high carbohydrate diet, what happens कि आपका blood glucose level बढ़ेगा, जाहिर है ना, और जैसे ही blood glucose level बढ़ेगा, insulin in turn causes rapid uptake, storage and use of glucose. So if you have more glucose in the body, it will be kicked into the cell by this lovely thing known as insulin. Okay, not only the muscle cells but also the adipose tissue, also the liver. Insulin promote the muscle glucose uptake and metabolism. So during much of the day, muscle tissue depend not only on glucose but also on the fatty acids for energy. The principal reason for this dependence on fatty acid is that the normal resting muscle membrane is only slightly permeable to glucose. It means in the absence of insulin. लेकिन अगर insulin मौजूद है, then it is very much permeable to glucose. However, under two conditions, the muscle do not use large amount of glucose. Number one is during moderate to heavy exercise. This usage of glucose does not require large amount of insulin because muscle contraction increases GLUT4 receptors from intracellular to the membrane, and GLUT4 receptor then starts taking up different amounts of glucose as opposed to the effect of insulin. अभी ये थोड़ी देर में मज़ीद discussion expand होगा. Then the second condition for usage of large amount of glucose by the muscle is during the few hours after the meal. At this time, the blood glucose concentration is very high and the pancreas is secreting large quantities of insulin. The extra insulin causes rapid transport of glucose into the muscle cells, which causes muscle cells to use glucose preferentially over fatty acids during this period, as will be discussed later as well. So काफ़ी फिजियोलॉजी में बास पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिटेल होते हैं. टोटल ओवरऑल बात यह है कि मसल सेल में, ये मसल सेल है, इंसुलिन होगा तो ग्लूकोज अंदर. दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी. अच्छा, फिर अब ये जो इतना सारा ग्लूकोज एंटर हो रहा है, ये मेटाबोलाइज होता है और ग्लाइकोजन स्टोर्स जनरेट करता है. आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो ज़ाहिर आप उसको स्टोर करेंगे ना, पैसे ज़्यादा होंगे तो बैंक में स्टोर करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी है. इफ द मसल्स आर नॉट एक्सरसाइजिंग आफ्टर अ मील एंड येट द ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द मसल, व्हाट विल हैपन? दे विल स्टार्ट मेकिंग ग्लाइकोजन. Okay, the glycogen can be used by the muscle later for the energy. जब ग्लूकोज नहीं है और आपको मसल्स को काम करना है तो वो ग्लाइकोजन यूज होगा. Glycogen is especially useful for short periods of extreme energy usage by muscles and even to provide spurts of anaerobic energy. तो इस पूरे पैराग्राफ का बॉटम लाइन ये है कि you use glucose into the cells जब आप वेल फेड स्टेट में हैं, और जब आप फास्टिंग कंडीशन में हैं तो वो ग्लाइकोजन दोबारा रीयूज हो जाएगा. ठीक है. Now, the quantitative effect of insulin to facilitate glucose transport through the muscle cell membrane is not a very high yield paragraph, but anyways, let's go through this. The quantitative effect of insulin to facilitate glucose transport through the muscle membrane is demonstrated in an experiment shown in figure 17.9.4. देखते हैं अभी. The lower curve labeled as control shows the concentration of free glucose measured inside the cell, demonstrating that glucose concentration remained almost zero despite intracellular increase in the extracellular glucose concentration up to 750. That is the control group. यानी ये ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है. इधर ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जब 10-20 थी या 50-60 थी, तब भी इंट्रा मस्कुलर यानी मसल के अंदर ग्लूकोज थोड़ा सा था. 300 पे गई तब भी थोड़ा सा है, 600 पे गई तब भी थोड़ा ही सा है, जीरो के आसपास है. मसल सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ. लेकिन जैसे ही आप सिस्टम में इंसुलिन डालते हैं तो इस सेल के अंदर ठक करके ग्लूकोज एंटर हो जाती है. और अब आप देखें, जब इंसुलिन आ गया तो 300 एक्स्ट्रा प्लाज्मा में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन अगर 300 है तो सेल के अंदर भी 100 से ऊपर हो गया है ना. सो द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इज व्हेन देयर इज इंसुलिन, glucose gets into the cell. When there is no insulin, glucose does not get into the cell. Okay? Now, insulin promotes liver uptake, storage and use. ये तो अब तक हम बात कर रहे थे मसल की. Now we're talking about liver. Liver में भी ये अपटेक को बढ़ाता है. One of the most important effect of insulin is to cause most of the glucose absorbed after a meal to be rapidly stored in the liver in the form of glycogen. Then, between meals, when food is not available and the blood glucose concentration begins to fall, insulin secretion decreases rapidly and the liver glycogen is split back into the glucose to provide glucose to the blood. Now, liver glycogen gives glucose back to the blood. Muscle doesn't. Okay? The mechanism by which insulin causes glucose uptake and storage
बहुत सारे स्टेप्स हैं, देखते हैं वन बाय वन. नंबर 1, इंसुलिन इनएक्टिवेट्स लिवर फॉस्फोराइलेज. इससे क्या होगा? इट्स द प्रिंसिपल एंजाइम दैट कॉजेज लिवर ग्लाइकोजन टू स्प्लिट. और इंसुलिन आते ही पहला काम ये करता है कि भाई नो स्प्लिटिंग ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि अब मुझे ग्लाइकोजन बनाना है तो मैं ग्लाइकोजन तोड़ूंगा नहीं. सो देयरफॉर तोड़ने वाला एंजाइम बंद कर दो, ब्लॉक कर दो. Okay, insulin enhances the uptake of glucose from the blood by the liver cell by increasing the activity of particular types of enzymes such as glucokinase. So more and more glucose is metabolized within the cell, and more glucose is taken into the liver cell. Insulin also increases the activity of enzymes that promote glycogen synthesis, such as glycogen synthase, क्योंकि इसका काम यही है इंसुलिन का, ग्लूकोज को अंदर भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन बनवाओ. Now the net effect of all these action is to increase the amount of glycogen in the liver. That's what was also the job in the muscle. हमने अभी ये बात की थी कि there is more and more glycogen in the muscle being formed. Okay, right. Now, glucose is released from the liver between the meals. So, when you are fasting, reverse things happen and glycogen liver से निकल के glucose को contribute करता है blood में to maintain normal blood glucose levels. Obviously, when the blood glucose level begin to fall to a low level between the meals, several steps happen. The decreasing blood glucose causes pancreas to decrease the insulin. क्योंकि अब glucose ने अब imagine करें, now you are in the fasting state. Now you are not in the well fed state. You are in the fasting state. तो insulin भी नहीं आएगा क्योंकि ग्लूकोज नहीं होगा बॉडी में. द लैक ऑफ इंसुलिन देन रिवर्सेस ऑल द इफेक्ट लिस्टेड. तो जो भी ये हो रहा था ना वो अब नहीं होगा, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ब्लॉक किया जा रहा था, अब वो ब्लॉक नहीं होगा. तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा तो मोर एंड मोर ग्लूकोज बनेगा, समझ रहे बात, और वो ब्लड में रिलीज होगा. तो बेसिकली लिवर से अब ग्लाइकोजन तोड़ के ग्लूकोज को बाहर लाया जा रहा है. द लैक ऑफ इंसुलिन एक्टिवेट्स द एंजाइम फॉस्फोराइलेज व्हिच ब्रेक्स अप glycogen. The enzyme glucose phosphatase, which had been inhibited by glucose, now becomes activated by the lack of insulin and causes phosphate radical to split away from the glucose, allowing the glucose to enter into the blood. So जब well fed state होगा तो ग्लाइकोजन बनेगा लिवर में, और जब फास्टिंग स्टेट होगा तो चीज़ें रिवर्स होंगी और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा और ब्लड में एंटर होगा. Now insulin promotes conversion of excessive glucose into fatty acids. अब पहला पॉइंट ये है कि जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है तो इंसुलिन की पहली प्रायोरिटी ये है कि वो ग्लाइकोजन के स्टोर्स रिप्लेनिश करे, उनको बढ़ाए लिवर में भी, मसल्स में भी. लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ अ पॉइंट जब ठीक ठाक ग्लाइकोजन ऑलरेडी बन गया, अब जब इतना सारा ग्लाइकोजन बन गया तो अब भाई अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें. तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है ग्लाइकोजन बनाने के बाद ये फैट बनाना शुरू कर देता है. ठीक है, सो ग्लूकोज से फिर फैट बनना शुरू हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन ऑब्वियसली. एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस व्हेन the quantity of glucose entering the liver is more than it can be stored as glycogen. Now, insulin promotes the conversion of all the excessive glucose into fatty acids. This is what now happens, okay? These fatty acids are subsequently packaged as triglyceride in very low density lipoprotein, which are transported in the blood to the adipose tissue and deposited as fat in the adipose tissue. Insulin also inhibit gluconeogenesis, mainly by decreasing the quantities of the enzymes which are required for gluconeogenesis. However, और ये क्यों करवाएगा? आप सोचें ना, ऐसा कॉमन सेंस कि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाना, स्टोर करना. ये नया ग्लूकोज क्यों बनाएगा? इंसुलिन तो निकला उसी वक्त है जब ऑलरेडी ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज़्यादा है. इंसुलिन तो निकला उसी वक्त है व्हेन देयर इज अ वेल फेड स्टेट, है ना. तो ये क्यों ऐसा करेगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की ज़रूरत ही नहीं है यार. ओके, नाउ लैक ऑफ इफेक्ट ऑफ इंसुलिन on glucose uptake and usage by the brain. So brain is the boss, उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं है. The brain is quite different from most other tissues of the body that insulin has little effect on the uptake of glucose. Instead, most of the brain cells are permeable to glucose and can use glucose even without intermediation by the insulin. And that's beautiful because diabetes के patient में अगर neurons भी dependent होते हैं, सोचें इंसुलिन पर ग्लूकोज एंट्री के लिए, तो ग्लूकोज तो एंटर ही नहीं होता ना. तो इसीलिए दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जिसमें नेचर ने सिस्टम ऐसे रखा है कि भाई ब्रेन जो है ना, सीएनएस स्पेशल चीज़ है, इसको अलग ही रखो, इसको स्पेशल ट्रीट करो. Now the brain cells are also quite different from other cells of the body in that they normally use only glucose for यूज भी सिर्फ ग्लूकोज करते हैं और इंसुलिन के अटैक में है भी नहीं. When the blood glucose level falls too low, such as in the range of 20 to 50 milligrams per 100 ml, तो फिर हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में बंदा जाता है, बेहोश होता है, फेंट होता है, ये सारी चीज़ें, इवन कोमा में भी चला जाता है. ओके, सो फेंटिंग, सीजर्स, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम है. सो ब्रेन के मुतालिक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंसुलिन हैज़ ऑलमोस्ट नो इफेक्ट.
right? Now the effect of insulin on carbohydrate metabolism of other cells. So हमने muscles की बात की, हमने liver की बात की, हमने brain की बात की. Now some other cells of the body. Insulin increases transport of glucose and usage in most other cells of the body. Exception आपको already बता दी है, brain cells. बाकी सब जगह ये ग्लूकोज एंट्री बढ़ाता है. The transport of glucose into the adipose tissue mainly provides substrate for glycerol portion of the fat. ठीक है यार, मतलब अगर मसल की बात करें तो ये ग्लाइकोजन बनाएगा, अगर लिवर की बात करें तो ये ग्लाइकोजन बनाएगा, लेकिन अगर एडिपोज टिश्यू की बात करें तो ये फैट ही बनाएगा ना, ये तो हमें पता है. ओके, सो अब तक हमने जितने इफेक्ट्स पढ़े हैं, दीज वर द इफेक्ट्स ऑन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट. नाउ लेट मी टेक यू थ्रू इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म. Although not quite as visible as the acute effects of insulin on carbohydrate metabolism, the effect of insulin on fat metabolism are rare in the long run. They are equally important as well. अक्सर लोगों से पूछो कि भाई इंसुलिन का क्या काम है, तो उनको एक ही काम पता होता है. They always say कि insulin is very important for carbohydrate. Oh भाई, insulin is also important for fat metabolism. It's also important for, देखें लिखा है equally important. They are also important for even protein metabolism. अभी करेंगे, मैं आपको दिखाऊं heading. If you don't trust me, I can show you effect of insulin on protein metabolism. So things are there ना, ये आपको समझनी है. So देखते हैं कि fat metabolism पर क्या है. Especially dramatic effect is the long-term effect of insulin deficiency in causing extreme atherosclerosis. Diabetic patient में ये बड़ा मसला है, often leading to heart attacks and cerebral strokes as well. First, however, let us discuss the acute effect of insulin on fat metabolism. So insulin promote fat synthesis. ये भी हमने ऊपर भी देखा था कि ग्लूकोज की एंट्री ज्यादा करवाता है and starts producing a lot of fat in the adipose tissues. Insulin has several effects that lead to fat storage in the adipose tissue. First, insulin increases glucose utilization by most body tissues. However, insulin also promotes fatty acid synthesis, especially when more carbohydrates are ingested. And this is what happens. You eat more carbohydrate and more insulin and more fat. Almost all these syntheses occur in the liver, and then the fatty acids are transported to the adipose tissues. Okay, the following factors are important to know. Number one, insulin increases glucose transport into the liver cell. We know this, and after liver glycogen concentration reaches to about 5 to 6%, further glycogen is not produced, and now all the glucose is directed towards fatty acid synthesis. The glucose is first split to pyruvate in the glycolysis pathway, and then pyruvate is converted to acetyl-CoA, and once you get this, it's a substrate to form fatty acid, acetyl-CoA. Next thing which you should know is that excess of citrate and isocitrate ions is formed by the citric acid cycle when there is excess glucose. So more glucose, more glycolysis, more citric acid cycle, and these ions have a direct effect on activation of acetyl-CoA carboxylases. You get more and more acetyl-CoA. And it forms malonyl-CoA, and there you go, begin fatty acid synthesis. So more citric acid cycle activity, more glycolysis activity, and you are getting more acetyl-CoA. Third thing is most of the fatty acids are then synthesized within the liver and used to form triglyceride, and then they are transported, they are released from the liver into the blood in the lipoprotein. Insulin activates the lipoprotein lipase, not the hormone sensitive lipase, but the lipoprotein lipase in the capillary walls of the adipose tissue, which split the triglyceride again into fatty acid, and they get into the adipose cells and where these triglycerides are stored. So all the story begins in the liver, लेकिन अब liver ये कह रहा है कि भाई मेरे पास already मैंने बहुत ग्लाइकोजन बना लिया भाई, इतना सारा ग्लाइकोजन अब मैं कहाँ लेके जाऊँ, तो अब मैं ग्लाइकोजन तो मजीद नहीं बना रहा, अब मैं फैटी एसिड बनाना शुरू करूँगा. So that's what happens. Okay. अच्छा, storage or insulin, role of insulin in the storage of fat in the adipose cells. Insulin has two other essential effects that are required for the fat storage in the adipose cells. Number one, insulin inhibits the action of hormone sensitive. देखें, lipoprotein lipase के action को बढ़ा रहा है और hormone sensitive lipase के action को block कर रहा है. Lipase is the enzyme that causes hydrolysis of the triglyceride already stored in the fat cell. Therefore, release of the fatty acid from the ये तो होगा ही ना यार, ये फैट सेल है फॉर एग्जांपल एडिपोज सेल, इसके अंदर जो फैटी एसिड है उसको ब्रेक डाउन करके बाहर तो नहीं निकालना ना, ये बाहर निकालने वाले को ब्लॉक कर दो, एंजाइम का नाम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज. अंदर डालने वाले को एक्टिवेट कर दो, एंजाइम का नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज. इजी स्टफ.
Now, insulin promotes glucose transport through the cell membranes also into the fat cell. तो ये जो अभी हमने सारा साइकिल पढ़ा था, इसमें ये हुआ था कि लिवर सेल में ग्लूकोज एंटर हुआ था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन, और चूंकि इनफ ग्लाइकोजन बन गया था तो अब फैटी एसिड बनना लिवर में स्टार्ट हुए थे और लिवर से बन के फिर वो पहुंचे थे एडिपोज सेल्स तक. यहाँ ये सारा मामला डायरेक्टली हो रहा है इनटू द एडिपोज सेल. सो इफ दिस इज एन एडिपोज सेल, इंसुलिन डायरेक्ट ग्लूकोज एंट्री इसके अंदर बढ़ाता है एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग ग्लिसरॉल, व्हिच इज द an important component in making the triglycerides. So insulin directly fat cells पे भी promote करता है fatty acid synthesis और storage of fat indirectly in the adipose cells, not via the liver. Insulin deficiency increases the use of fat for energy. All aspects of fat breakdown and its use for providing energy are greatly enhanced in the absence of insulin. क्योंकि इंसुलिन जब तक है तो वो नहीं यूज होने देता, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो फैट यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं और सब रिवर्स होगा ना. फिर ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिवेट हो जाएगा, फैटी एसिड बाहर आएगा फैटी सेल से. ऑल दीज थिंग्स विल हैपन. ओके, right. Insulin deficiency also causes lipolysis of the stored fat. Again, it will activate now the hormone sensitive lipase. The same concept, once you gather the concept, you understand the rest. Okay, so if there is no insulin, तो ये fat cell है, उसमें जो fatty acid stored थे वो निकल के बाहर आना शुरू हो जाएंगे by the action of hormone sensitive lipase. अब ये activate हो जाएगा क्योंकि इसको block करने वाला insulin नहीं है. ठीक है. Insulin deficiency also increases the plasma cholesterol and the phospholipid concentration. The excess of the fatty acid in the plasma associated with insulin deficiency also promote liver conversion of some fatty acid into phospholipids and cholesterol. So basically, अब इंसुलिन नहीं है तो ये जो सारे फैटी एसिड हैं सेल के अंदर आ नहीं रहे बल्कि उल्टा सेल से निकल रहे हैं. सो दे इंक्रीज द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. दीज टू सब्सटेंसेस along with the excessive triglyceride formed at the same time in the liver are then discharged into the blood in the lipoprotein. So the blood has a lot of cholesterol levels now because insulin is not there, and this can sometimes even lead to high rate of atherosclerosis, even stroke. So diabetic patients में atherosclerosis is a common phenomena because insulin is not there. Excess usage of fats during insulin deficiency causes ketosis and acidosis. Now, diabetic ketoacidosis is a serious emergency. Insulin deficiency also causes excessive amounts of acetoacetic acid to be formed in the liver cells. In the absence of insulin, but in the presence of excessive fatty acid, तो situation ये है कि insulin है नहीं और fatty acid बहुत ज़्यादा है ना, निकल के आ रहे हैं फैट्स में से. In the liver cell, the carnitine transport mechanism for the transporting fatty acid into the mitochondria becomes increasingly activated, or as a result, there is beta oxidation of fatty acid, then proceeds rapidly releasing extreme amounts of acetyl-CoA. A large part of this excess acetyl-CoA is then condensed to form acetoacetic acid. Therefore, you get acidosis because you are getting acid production. Insulin है नहीं, fatty acid metabolize नहीं हो रहा है, beta oxidize हो रहे हैं, मतलब metabolize होके store नहीं हो रहा है, blood में आ रहे हैं और acetyl-CoA बना रहे हैं beta oxidation से, and you are getting ultimately acetoacetic acid. And this is the reason for it's a keto acid and it's an acid, so ketoacidosis in the absence of insulin is a common phenomena. At the same time, the absence of insulin also depresses utilization of the acidoacetic acid, so the levels go high and the person has signs and symptoms of ketoacidosis, which include nervous symptoms, even coma, all these sort of things. Okay, right? Now, effect of insulin now on protein. So that was on fat. On carbohydrate, we discussed what are the effects of insulin. Fat, we discussed. Now I have to talk you through the effect of insulin on proteins. Insulin promotes protein synthesis. जैसे glycogen synthesis को बढ़ा रहा है, इस तरह it's also increasing protein synthesis. So protein, carbohydrates, fats are stored in the tissues. ये एक general effect है insulin का कि fats को भी store करो, glucose को in the form of glycogen store करो, proteins को store करो, amino acid लो blood से. So that's the job of the insulin. Okay, the manner in which insulin causes protein storage is not very well understood, but here are some important points. Insulin stimulates transport of many of the amino acids into the cells. Among the amino acids most strongly transported by insulin are valine, leucine, isoleucine, phenylalanine, as well as tyrosine. Okay, now insulin increases translation of messenger RNA, thus forming new proteins. Insulin turns on the ribosomal machinery, protein synthesis में help कर रहा है. So these are the things which are postulated कि इस तरह insulin
प्रोटीन सिंथेसिस को इन्हांस करता है. ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंसुलिन ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेलेक्टेड डीएनए जेनेटिक सीक्वेंसेस, सो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डीएनए एज वेल. इंसुलिन इनहिबिट्स कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, और इनहिबिशन से जाहिर है स्टोरेज को प्रोमोट कर रहा है और कैटालिसिस को या कैटाबॉलिज्म को डीमोट कर रहा है. इन द लिवर इंसुलिन डिप्रेसेस द रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, देयरफॉर प्रोटीन यूटिलाइजेशन नहीं हो रही टू जनरेट न्यू ग्लूकोज. तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो इंसुलिन के हम पोस्टुलेट कर सकते हैं कि दिस इज हाउ इट इज हेल्पिंग इन मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. ओके, एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स नहीं पता. जितने क्लियर मैकेनिज्म्स ग्लूकोज रेगुलेशन के पता है, फैट रेगुलेशन का पता है, इतने प्रोटीन का नहीं पता. इंसुलिन डेफिशिएंसी अगर हो तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, ऑब्वियसली डिप्लीशन होगी, एंड देयर विल बी मोर अमाइनो एसिड इन द ब्लड. Now, virtually all the protein stores come to a halt when insulin is not available. Catabolism of protein increases and the protein synthesis stops, and there are large quantities of amino acid dumped into the plasma. So, more amino acid into the plasma. Simple, समझना आसान है. Insulin and growth hormone interact synergistically to promote growth. That's an important point. कि growth hormone को काम करने के लिए insulin चाहिए. Because insulin is required for synthesis of protein, it is essential for growth hormone to work. As demonstrated in figure 79.6, a depancreatized, वाह ये मुश्किल हो गई मुझे पढ़ने में भी, depancreatized यानी ऐसा एनिमल जिसमें आपने पैंक्रियाज निकाल दिया है. hypophysiectomized rat, हाइपोफिजियल एक्सिस भी निकाल दिया है, पैंक्रियाज भी निकाल दिया है, विदाउट रिप्लेसमेंट. यानी यहाँ से आप ग्रोथ हार्मोन को चैलेंज कर रहे हो और यहाँ से आप इंसुलिन को चैलेंज कर रहे हो पैंक्रियाज निकाल के, तो ग्रोथ नहीं होती. फर्दर मोर, administration of either growth hormone or insulin at one time, no growth. तो इस सब साबित ये होता है कि भाई ग्रोथ हार्मोन भी चाहिए और इंसुलिन भी चाहिए, दोनों चीजें होंगी तो ग्रोथ होगी. ये पूरा इस एक्सपेरिमेंट में बताया हुआ है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट. सो इफ फॉर एग्जांपल देयर इज दैट्स द ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल है, रैट होगा फॉर एग्जांपल, आई थिंक, लेट मी सी, इट्स अ रैट. सो इसमें आपने हाइपोफिसिस सेरेब्राई भी निकाल दिया और उसको डीपैंक्रेटाइज भी कर दिया. सो नो ग्रोथ हार्मोन एंड क्योंकि इसमें से आपने ये एक्सेस, हायर एक्सेस ब्लॉक कर दिया है, एंड ऑल्सो नो इंसुलिन क्योंकि पैंक्रियाज निकाल दिया है. अच्छा, फिर आपने ग्रोथ हार्मोन दिया, इंसुलिन दिया, तब भी देखें ग्रोथ फ्लैट है. लेकिन जब दोनों दिए, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन, देयर इज अ स्पर्ट. ग्रोथ होने के लिए ग्रोथ हार्मोन भी चाहिए और इंसुलिन भी चाहिए, दोनों मिलकर काम करते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे ये. Perhaps a small part of the necessary for both the hormone result from the fact that each hormone promotes cellular uptake of different amino acid. और ये इतनी मजे की बात नहीं है, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि दोनों ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन का होना जरूरी है. ओके, तो अब तक हम इतनी सारी जो बात कर रहे थे, इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन, अब जरा देखते हैं इंसुलिन निकलता कैसे भाई. ये तो पता है ना कहाँ से निकलता है, फ्रॉम द बीटा सेल्स, पैंक्रियाज से निकलता है. कैसे निकलता है अब बताता हूँ. Figure 79.7 shows the basic cellular mechanism for insulin secretion by pancreatic beta cell in response to increased blood glucose. The beta cells have large number of glucose transporters that permit a rate of glucose influx that is proportional to the blood concentration in the physiological range. Once inside the cell, glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate by glucokinase, normal step of glycolysis. This phosphorylation appears to be the rate-limiting step for glucose metabolism in the beta cells and is considered the major mechanism for glucose sensing and adjustment of the amount of secreted insulin. Now, अब तक कितनी बात हुई? अब तक ये बात हुई कि ये आपके सामने मौजूद है बीटा सेल. आपने खाना खाया, खाना खा के आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, वो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में इन ट्रांसपोर्टर्स के जरिए आ गया बीटा सेल्स के अंदर. ग्लूकोकाइनेज ने एक्ट किया, बन गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं. Now the glucose 6-phosphate is subsequently oxidized to form ATP, which inhibit the ATP sensitive potassium channel. Closure of the potassium channel depolarizes the cell membrane, thereby opening the voltage-gated calcium channel, which are sensitive to changes in the membrane voltage. This effect produces influx of calcium. It stimulates the fusion of the insulin-containing vesicles, and there is exocytosis of the insulin vesicle. So, जैसे ही ग्लूकोज आया, इसकी ऑक्सीडेशन से एटीपी बना और उस एटीपी जनरेशन ने पोटेशियम चैनल्स को कर दिया ब्लॉक. जैसे ही पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो गए, डीपोलराइजेशन हुई, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम अंदर और ये वेसिकल्स बाहर. सो दैट्स हाउ इंसुलिन इज सीक्रेटेड. ब्यूटीफुल मैकेनिज्म्स. ओके, I so like physiology. Now, other nutrients such as certain amino acids can be metabolized by the beta cells to increase the intracellular ATP levels. Some hormone, अच्छा ये है भी मजे की चीज़ यार. इसको अगर आप बिल्कुल जेनरिक और तफरी वाले अंदाज में देखो तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, ATP.
तो सेल को मैसेज आ रहा है कि ओ भाई बार बंदे ने तबाही मचा दी है यार, ये खा लिया, वो खा लिया, बिरयानी खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, हाई ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से अंदर सेल को पता ही चल रहा है कैसे कि हाई एटीपी है, भाई एटीपी बहुत बन रहा है यार, एटीपी बन रहा है, इंसुलिन बार भेजो, ग्लूकोज को सेलों के अंदर डालो। ये है कहानी, मजेदार यार, है ना। बॉडी में क्या ब्यूटीफुल सिस्टम है यार। अच्छा, तो ये ग्लूकोज से भी एटीपी ज्यादा बनता है बीटा सेल्स के अंदर। सम अमीनो एसिड्स आल्सो डू दिस। Some hormones such as glucagon-like peptide, glucagon-dependent insulinotropic peptide, and there are some others as well. They increase the intracellular calcium level through other signaling pathways and enhance the effect of glucose, although they do not have major effect on insulin secretion. ये भी अच्छा है कि उनसे कैल्शियम तो डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन इंसुलिन तो कोई और मैकेनिज्म ज़ाहिर है ऐसे भी हैं जो अभी तक हमें पता भी नहीं होंगे यार सेल्स के अंदर। सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स, important pharmacological bridge, stimulate insulin secretion by binding to ATP sensitive potassium channel and blocking their activity. So if there is a drug which can actually block potassium channel, such as sulfonyl ureas, they will increase insulin secretion. So they are insulin secretagogues, sulfonyl urea drugs. Okay, and they are commonly used in the treatment of diabetes. How is it controlled? The insulin secretion. At one time, it was believed that insulin secretion was controlled almost entirely by the concentration of glucose in the blood. So, more glucose in the blood, more secretion of the insulin. That was the hypothesis for a very, very long time. However, as more has been learned about the metabolic functions of insulin for protein and fat metabolism, things have changed. Increased blood glucose stimulates insulin secretion. ये तो rule number 1. प्लाज्मा में, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा, इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होगा। रूल ऑफ थंब, एट द फास्टिंग लेवल बिटवीन 80 to 100, the rate of insulin secretion is minimal, only about 25 nanograms, okay? But as the blood concentration of glucose increases, the rate of secretion of insulin also increases, okay? Now, the concentration of insulin in the plasma increases almost tenfold within 3 to 5 minutes of acute elevation of blood glucose. आप कुछ मीठा पी लें, कोई शरबत पी लें और आपका 3 से 5 मिनट में इंसुलिन का सर्ज होगा. Okay, beginning at about 15 minutes, the insulin secretion rises a second time and reaches a new plateau in about 2 to 3 hours to clear all the remaining glucose. So एक immediate surge है और एक 10 से 15 मिनट के बाद है. A feedback relation between glucose concentration and insulin secretion. As blood glucose concentration rises above 100, secretion of insulin rises rapidly, reaching a peak in 10 to 25 minutes. The basal level at glucose concentration between 400 and 600, as shown in the figure 79.9. Well, not necessarily you need to understand the figure. Simple point is if the glucose is more, insulin is more in 10 to 3 to 5 minutes में 10-fold और 2 से 3 घंटे में peak तक पहुंच जाएगा इंसुलिन. Not 2 से 3 घंटे, sorry, 10 से 15 मिनट यार, 10 से 25 मिनट, and there will be the peak of insulin. Okay, thus the increase in insulin secretion during glucose stimulus is dramatic, both in its rapidity and high level of secretion. Wow, यानी फौरन 3 से 5 मिनट में you get a spike and then it's going to the peak for like 10 to 25 minutes और फिर एक और surge आता है 2 से 3 घंटे में. This response of insulin secretion to an elevated blood glucose concentration provide an extremely important feedback mechanism for regulating blood glucose concentration. That is, any rise in the blood glucose increases insulin secretion and the insulin in turn increases the rate of transport of glucose into the liver and muscle ताकि blood plasma concentration of glucose कम हो जाए. So that's all easily understandable, no big deal there. Okay, तो इंसुलिन की बेसिकली सिक्रेशन हो रही है बाय द लेवल ऑफ ग्लूकोज, ये अब तक की हमारी बात है. बट देयर आर सम अदर स्टिमुलाई एज वेल, सच एज देयर आर सम अमीनो एसिड्स, particularly arginine and lysine. They increase the levels of insulin, so they are also a stimulus for insulin. There are some GI hormones, a mixture of several important GI hormones such as gastrin, secretin, cholecystokinin, GLP. They can cause moderate increase in insulin secretion as well, so you need to know them at least. There are some other hormones as well that either directly increase the insulin secretion or they potentiate the glucose stimulus for insulin secretion, such as glucagon. Glucagon को अक्सर समझा जाता है कि this is merely the opposite of insulin, but ऐसा नहीं है. Glucagon थोड़ा बहुत help भी करता है यार. It also helps, ठीक है. Autonomic nervous system is an important one. यहाँ मैंने cortisol का जिक्र नहीं किया. Growth hormone, they also sometimes potentiate insulin secretion, and also the autonomic nervous system, right? So you should know कि ग्लूकोज के अलावा भी कोई है जो इंसुलिन को निकालना चाहता है. ओके, नाउ द रोल ऑफ इंसुलिन इन स्विचिंग बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म. सो फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन इट शुड बी क्लियर दैट इंसुलिन प्रमोट यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी एंड डिप्रेसेस द यूटिलाइजेशन ऑफ फैट.
तो फैट को ये स्टोर कर रहा है और कहता है ग्लूकोज को यूज करो. कन्वर्सली लैक ऑफ इंसुलिन उल्टा कर देगा कहानी को. ठीक है. फर्दर मोर दिस, अच्छा ये सब ब्रेन पे अप्लाई नहीं होता, ब्रेन स्पेशल टिश्यू है, इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है उसको. फर्दर मोर द सिग्नल दैट कंट्रोल्स दिस स्विच mechanism is principally the blood glucose concentration. When glucose concentration is low, insulin secretion is down and fat is used for energy. Simple चीज हो गई. At least 4 other known hormones also play important roles in switching mechanism. यानी स्विचिंग मैकेनिज्म से मतलब ये कब आप ग्लूकोज को यूज करोगे एज सोर्स ऑफ एनर्जी, कब फैट को यूज करोगे. तो इंसुलिन का तो क्लियर है, जब ग्लूकोज हाई होगा और इंसुलिन हाई होगा तो ग्लूकोज यूज होगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. जब इंसुलिन लो होगा तो फैट यूज होगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और बाकी हार्मोन्स जो हैं, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, ये सब भी ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन और फैट कॉन्सेंट्रेशन के स्विच को कंट्रोल करते हैं. हम पढ़ेंगे इनके बारे में जब इनका जिक्र करेंगे. सो कॉर्टिसोल फॉर एग्जांपल इन द एड्रेनोकॉर्टिकल सेक्शन पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी. ग्रोथ हार्मोन हम कर चुके हैं. एपिनेफ्रिन कई दफा डिस्कस किया है. ग्लूकागॉन इस चैप्टर में करेंगे. सो विल टॉक अबाउट दीज. ओके, वेट फॉर अ मिनट. Epinephrine has a potent effect causing glycogenolysis in the liver, thus releasing large quantities of glucose. We know this effect from our previous lectures. तो इंसुलिन की स्टोरी यार ऑलमोस्ट खत्म हो गई है. ठीक है, मजे का था ना. ये क्या है टेबल, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, ये सारी चीजें कराती हैं. ओके, और डिक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, ये यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो. वैसे अभी तक जितना पढ़ा है ना, ये सब वही चीजें हैं कि इंसुलिन ज्यादा निकलेगा अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा, अगर फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होंगे, अमीनो एसिड्स, ये सारे हार्मोन्स, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन, ये सारी चीज़ें इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाएंगी. एंड ऑल दीज विल डिक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन. टॉप पेस में है, अगर ग्लूकोज कम होगा तो इंसुलिन कम होगा. ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं. नाउ आई हैव टू क्विकली गो थ्रू ग्लूकागॉन. इट्स अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. जैसे बीटा सेल्स में से इंसुलिन निकल रहा था, यहाँ अल्फा सेल्स है. एंड it is released when the blood concentration falls. इंसुलिन कम होता है, ग्लूकागॉन बढ़ता है जब ग्लूकोज concentration blood में कम होती है. Has several functions which are diametrically opposed to the actions of insulin. So that's the easiest way to remember it. इंसुलिन ने जो काम किए थे उसको opposite ग्लूकागॉन करेगा. ठीक है. Like insulin, glucagon is also a large polypeptide. 3000 Dalton इसका molecular weight है. 29 amino acids. Upon injection of the purified glucagon into an animal, a profound hyperglycemia. So देखो, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया करता है बिकॉज वो ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाता है, ग्लूकागॉन बाहर लेके आता है. हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट. ओके, so it's a hyperglycemic hormone effect. और ये रिलीज कब हो रहा है? ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशंस, राइट. इन द फास्टिंग स्टेट में ग्लूकागॉन है, वेल फेड स्टेट में इंसुलिन है. इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर इंसुलिन का, इंसुलिन का नहीं भाई, अब इंसुलिन से बाहर आ जाओ, ग्लूकागॉन का. ओके, द मेजर इफेक्ट of glucagon on glucose metabolism is number 1, breakdown of the liver glycogen. उल्टा है, देखो इंसुलिन का, इंसुलिन ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करता है. एंड इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस. दोनों का पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, right? Now, glucagon causes glycogenolysis and increased blood glucose concentration. The most dramatic effect is to increase the blood glucose level by glycogenolysis. Glucagon activate adenylyl cyclase, which causes the formation of cyclic adenosine monophosphate, which activate the protein kinase regulator protein, activates the protein kinases, phosphorylase B activation, phosphorylase B into phosphorylase activation, AMA, and it promotes the degradation of glycogen into glucose 1-phosphate. So all the steps are listed. अगर आपको glycogen metabolism के effects याद हैं, सारे steps याद हैं, मैंने सत्यनारायण से पढ़ाया मैं आपको, तो आपको ये बात समझ में आएगी यहाँ पे क्या बात हो रही है. Okay? Now, this sequence of events is exceedingly important for several reasons. First, it is one of the most thoroughly studied of all second messenger system, the cyclic AMP. Second, it demonstrates a cascade system in which each succeeding product is produced in greater quantity than preceding product. यार ये amplifying नहीं पता रहा आपको, छोड़ो यार, टेंशन न लो, जिंदगी में और चीज़ें बहुत हैं. अभी आपने, लेकिन मैं इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ छोड़वा दूँ आपको जो आपके मेडिकल कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट हो. याद रखने वाली बात ये है कि इंक्रीज ग्लूकागॉन, इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड. ओके, Now, it also increases gluconeogenesis. So, new glucose formation भी ये increase करता है. Simple. इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है. Other effects क्या हैं glucagon के? Most other effects of glucagon occur only when its concentration rises well above the maximally normal found in the blood. So, perhaps the most important effect is that glucagon activates adipose
cell lipase, making increased quantity of fatty acid available to the energy system. देखो, insulin makes glucose as a prime source of energy. Glucagon fatty acid को available कर रहा है. Glucagon in high concentration also enhances the strength of the heart. यार कि बहुत अच्छी चीज़ है क्या? Increase blood flow in some tissues such as kidney. Enhances bile secretion. Inhibits the gastric acid secretion. ये तो लग रहा है अच्छे अच्छे काम है यार ग्लूकागॉन के, बट सिर्फ डिस्कशन के लिए अच्छे हैं. ये नहीं पता चला इंजेक्शन देना शुरू कर रहा है. How is it regulated? Increased blood glucose inhibits glucagon secretion. End of story. यही चीज़ आपको याद रखनी है. Increased blood glucose concentration increases insulin secretion but decreases glucagon secretion. That's it. Okay. Now increased blood amino acid stimulate. So amino acid अगर ज़्यादा होंगे so glucagon stimulate होगा. One way of looking at this is कि अगर अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे तो वो ग्लूकागॉन के पास जाके बोलेंगे भाई हम पे काम करो और हमसे नया ग्लूकोज बनवाओ, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाओ, and that's the job of glucagon. High concentrations of amino acids such as those that occur in the blood after a meal containing high protein stimulate secretion of glucagon. This is the same effect that amino acid have stimulating insulin as well. Since in this instance the glucagon and insulin responses are not opposite. The importance of amino acid stimulation of glucagon secretion is that glucagon then promote rapid conversion of amino acid into glucose, gluconeogenesis, so more and more glucose being available. Okay. Now, so ये बात आपने देखी. In this context, glucagon और insulin का effect opposite नहीं है. So it's always contextual. मैं हमेशा बताता हूँ physiology में कि physiology is very much contextual subject. यानी चीज़ों को आपको कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. हमेशा कोई हार्ड एंड फास्ट एनाटमी है ना, जैसे यार एनाटमी तो बड़ी वो हार्ड एंड फास्ट चीज़ है कि भाई इतने मेटाकार्पल्स हैं तो इतने मेटाकार्पल्स हैं, बात ख़त्म. लेकिन फिजियोलॉजी में अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा हुआ तो ऐसा होगा, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. Now, excessive exercise stimulates secretion of glucagon. During exhaustive exercise, blood glucagon concentration often goes very high, 4 to 5 folds. The cause of this increase is not very well understood, but the blood glucose level has to be high during exercise, so perhaps that's the reason. Okay. Now, ये क्या बात कर रहा है भाई? Somatostatin inhibit glucagon and insulin. यार ये तो सभी को ब्लॉक कर, इसको भी ब्लॉक कर रहा है, इसको भी ब्लॉक कर रहा है. डेल्टा सेल से निकलता ही है. And it's a very small protein, 14 amino acid polypeptide. It inhibits both glucagon and insulin. Almost all the factors related to ingestion of the food stimulate somatostatin secretion. These factors include increased blood glucose, increased amino acid, increased fat. ये kind of a control mechanism है कि यार ये जो इतना सारा insulin और glucagon निकल रहा है इसको किस तरह रोकें. In turn, somatostatin has multiple inhibitory effects. Number one, somatostatin act locally within the islets and try to inhibit both insulin and glucagon. It decreases the motility of the stomach. Okay. It also decreases both secretion and absorption of gastrointestinal tract से भी. Okay. So it's kind of an inhibitory thing. यार negative चीज़ हो तुम, बिल्कुल negative चीज़ हो. Somatostatin, I don't like you. It's also the same chemical substance as growth hormone inhibitory. यहाँ भी inhibitory. यार भाई मेरी तुम्हारी कट्टी हो गई, हम दोस्ती नहीं है. Okay. Now, summary of the blood glucose regulation. अब तक हमने इंसुलिन के different aspects देखे. Then we talked about some aspects of glucagon, and now the summary. The blood glucose concentration is narrowly controlled, normally usually between 80 to 90 during the fasting condition. This concentration increases to up to 140 or maybe 200 when you have eaten quite a lot. Okay, so basically काफी अच्छा control होता है. The mechanism for achieving this high degree of control have been presented in this chapter. The liver function as a main ऑर्गन सिस्टम फॉर ग्लूकोज बफर. जब ग्लूकोज ज़्यादा है तो इंसुलिन ज़्यादा है, लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है. जब इंसुलिन नहीं है, ग्लूकागॉन ज़्यादा है तो ग्लाइकोजन निकल के टूट के क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. लिवर इज द मेन बफर ऑर्गन कंट्रोलिंग ग्लूकोज लेवल. देन बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन फंक्शन एज एन इंपॉर्टेंट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल. ये बात हमने की है 20 चैप्टर में कई दफ़ा. इन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, अ डायरेक्ट इफेक्ट of low blood glucose on the hypothalamus also stimulates sympathetic nervous system. The epinephrine secreted by the adrenal gland further increases the release of glucose from the liver because there is hypoglycemia. Makes sense. Finally, over a period of hours and days, both growth hormone and cortisol are secreted, and they also try to counter hypoglycemia because ये दोनों जो important stuff, they increase glucose levels in the blood. Okay. Now, why is it very important to maintain blood glucose level? One might ask, why is it so important to maintain a constant blood glucose concentration? Particularly because most tissues can shift
If glucose is not available to fats, for example, or protein, for example, for energy, then why do we need to maintain glucose levels to a very, very narrow range? The answer is that glucose is the only nutrient that normally can be used by the brain. भाई, अगर आपका ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो ब्रेन गया टाइटाई फिश. और भी कुछ ऑर्गन्स हैं, अभी आपके काम के ऑर्गन बताता हूँ. रेटिना, germinal epithelium of the gonads. Do you not want to reproduce? If yes, you have to maintain glucose levels. Okay, so आपको alert रखने के लिए, आपको reproducible रखने के लिए, आप चीज़ों को देखते रहें, इसके लिए glucose levels have to be maintained very, very tight. Okay, most of the glucose formed by gluconeogenesis during the interdigestive period, यानी fasting period, is used for metabolism in the brain. Indeed, it is important that the pancreas not secrete insulin during this time. Oh wow. Because एक तरफ आप ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बना रहे हो, दूसरी तरफ इंसुलिन आके इसको सेल के अंदर डाल दें तो दोबारा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा. It is also important that blood glucose concentration not rise too high for several reasons. Number one, glucose can exert large amount of osmotic pressure in the extracellular fluid and it can cause dehydration into the cells. Wow. An excessively high level of blood glucose concentration causes loss of glucose in the urine. Loss of glucose in the urine also causes osmotic diuresis by the kidney. It can deplete electrolytes from your body. Long-term increase in the blood glucose may cause damage to many tissues such as blood vessels. Vascular, and this is all what happens in diabetes, by the way, leading to heart attack, blindness, and all these sort of things. Okay, so we have to maintain a very, very tight limit of glucose in the blood. Now, diabetes mellitus, although ये मेडिसिन में पैथो में हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ इसका फ्लेवर ले लो. It's a syndrome of impaired carbohydrate, fat and protein metabolism. So diabetes number one is not only purely associated with carbohydrate problems, okay? इसमें fat और protein भी issues हैं. And it is either by the lack of, या insulin है ही नहीं, या there is decreased sensitivity, यानी एक सेल है यहाँ पे और इसके पास ये रिसेप्टर है जो कि इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करता है. तो अब या तो इंसुलिन नहीं बन रहा, दैट इज ऑल्सो डायबिटीज, या इंसुलिन बन रहा है लेकिन ये रिसेप्टर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इट हैज बिकम रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन. दोनों कंडीशन में दिस इज डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन होगा ही नहीं, देयर इज नो इंसुलिन, लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन. टाइप 2 डायबिटीज में देयर इज रिड्यूस सेंसिटिविटी टू इंसुलिन. ओके, यानी टाइप 1 में आप अगर इंसुलिन का इंजेक्शन दोगे तो इट विल हेल्प बिग टाइम, लेकिन टाइप 2 में आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी. इंसुलिन का इंजेक्शन देके काम नहीं होगा क्योंकि सेल वैसे ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो जितना ज़्यादा इंसुलिन दोगे फायदा कोई नहीं होने वाला. इन बोथ टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल मेन फूड स्टफ इज ऑल्टर्ड. ऑब्वियसली इट्स अ डिसीज कंडीशन यार. टाइप 1 डायबिटीज इज द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो गए. इंजरी टू द बीटा सेल of the pancreas or disease that impair insulin production can lead to type 1. So basically, जो beta cells हैं, they are destroyed either by autoimmune reaction or by some viral infection. No more beta cells, no more insulin. Okay, and blood concentration rises to high levels in diabetes mellitus because वो सेल के अंदर नहीं जा रही, तो ब्लड प्लाज्मा में पड़ी रहती है हाई. Increased blood glucose can cause loss of glucose in the urine. ये बात अभी हमने डिस्कस की थी. It starts coming in the urine. It causes dehydration because you lose a lot of liquid. मैं डिटेल्स इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेडिसिन में ये पढ़ाऊंगा. And chronic high glucose concentration causes tissue injury. ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ हमने अभी पढ़े थे ना, ये वही सारे पॉइंट्स की रेपिटेशन है ब्लू बॉक्सेस में. So don't worry about them. Okay. डायबिटीज मेलाइटिस कॉजेज इंक्रीज, मेडिसिन में ये टॉपिक ना मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसलिए मैं स्किम कर रहा हूँ यहाँ से. डायबिटीज मेलाइटिस कॉजेज इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ फैट एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ये बात हम कर चुके हैं ऊपर कि इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ कीटो एसिड्स एंड दोस कीटो एसिड्स कैन लीड टू बिल्डअप ऑफ एसिडीमिया व्हिच कैन लीड टू इवन कोमा एंड डेथ. ओके, सीरियस स्टफ यार. अच्छा जी, and diabetes is very, very common disease. Atherosclerosis is very common. Stroke is very common. Diabetes causes depletion of body's protein because there is no insulin. Protein breakdown is happening. Treatment of type 1 diabetes is one thing. It's insulin. You have to give the patient insulin. If there's no insulin, then you give insulin. Okay? Effective treatment of type 1 diabetes mellitus is administration of enough insulin so that the patient will have carbohydrate, fat, and protein metabolism normal. Insulin is available in several different forms. One is called regular insulin. It is a duration of action lasting from 3 to 8 hours. Whereas other forms of insulin, precipitated with zinc for example, are absorbed slowly from the injection site. So there are different formulations available. Obviously यहाँ जिक्र नहीं किया, मेडिसिन में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी अलग अलग तरह की इंसुलिन प्रेपरेशंस मौजूद हैं मार्केट में. ओके, देन कम्स द टाइप 2 डायबिटीज. इसमें इंसुलिन शायद नॉर्मल है लेकिन सेल का जो इंसुलिन का रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा.
और ये यूजुअली एडल्ट ऑनसेट होती है, और बल्कि इसके भी अब डिफरेंट फॉर्म्स हैं. Now, obesity, insulin resistance, and metabolic syndrome. That's increasingly becoming common these days. Metabolic syndrome. इसके कुछ parameters हैं, जिसमें one of them is insulin resistance increase and obesity है. तो insulin is there, but the person is actually not responding to insulin. और उसके जो components हैं वो हैं obesity, metabolic syndrome के, insulin resistance, hyperglycemia during fasting, and lipid abnormality, and hypertension. So they all make a complex called metabolic syndrome, and these persons develop very rapidly diabetes. Okay, so that's a kind of pre-diabetic condition which should be taken very, very seriously. Some causes of insulin resistance, why a cell would not respond to insulin: obesity, glucocorticoid, growth hormone, pregnancy, policy. This is a long list where if you control obesity and overweight, exercise करें ताकि आपके insulin resistance normal हो. That's the most common thing you can do. Other factors that can cause insulin resistance are polycystic ovarian disease. So read this list, and that should list everything here. I'm gonna skip all these details because ये medicine में हमने करनी है. So physio में हम नहीं कर रहे. Major मोटा concept मैंने आपको diabetes का दिया है. So that's that table you should actually have a look at. Type 1 diabetes जिसमें insulin नहीं होता is usually less than 20 years में manifest करती है. It's adult onset. Type 2, body mass is low, there it's high. Insulin levels are low in type 1. They're normal or even high in type 2. Glucagon levels are opposite, and plasma glucose is increased in both of them. Insulin sensitivity is reduced in type 2, normal in type 1. और इसकी थेरेपी है insulin, इसकी थेरेपी है all sort of other stuff such as exercise, lifestyle modification, and all these sort of things. Okay. Right, so I think I'm leaving the rest of this stuff because इन्होंने एक heading दी है छोटी acetone breath. अब acetone breath पे I would like to spend at least 5-10 minutes. वो मेडिसिन में करेंगे. यहाँ इन्होंने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है, आपको ना कॉन्सेप्ट सही समझ में आएगा ना बात. इंसुलिनोमा इज अ ट्यूमर जिसमें ऑब्वियसली हाइपर इंसुलिनोमा है, तो इंसुलिन रिलीज होगा. ऑल्दो एक्सेसिव इंसुलिन प्रोडक्शन अकर्स मच मोर रेयरली देन डज डायबिटीज. दिस इज मोर कॉमन. ये बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनमें इंसुलिन ज़्यादा, इंसुलिन आमतौर पर कम होता है, जो कि डायबिटीज़ mellitus में होता है. About 10% of 10 to 15% of these adenomas are malignant, occasionally metastasize from the islets of Langerhans to other parts, and इसमें obviously cells go malignant, produce a lot of insulin. They will also produce a lot of C-peptide, and this is what you test as well. And these patients, because इनमें insulin बहुत ज़्यादा है, तो they will develop hypoglycemia in their blood, low blood glucose, and they can even go to hypoglycemic shocks. Okay, so with this let us end the chapter here. आपसे फिर endocrinology के अगले चैप्टर में मुलाकात करूंगा बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा.